Anybody from Feb batch? Feb? कोई भी नहीं है Feb batch का? Okay. So basically I wanted to show you, all of you, the answer sheets so that you have an idea of how not to lose marks and what not to do, basically, what you shouldn't be doing in the exams. So I wanted to show you some of the answer sheets. That was my intention for today, so that the mistakes are not made the same way. So I'll show you the answer sheets of the Feb batch. If the Feb batch is not there right now in class, then they will lose that. But at least you will benefit. So I'll begin by sharing my screen. Let me just open up phase 2. Okay. I'll just share my screen. Let me know when you can see my screen. Yes, sir, we can. See my screen. So basically, this is how you will be the March and the April batches. This is how you will be submitting your answer sheets, like this, in this manner. So now I'll show you what should not be done. So, or where the marks get lost in some manner or the other. So I'm showing you the plotting first, the plotting, the radar plotting answer sheet. So here you can notice that this is the Navigate's answer sheet that he has submitted. Okay. So can you see my screen? Yes, Okay. So this is question number 4. We are looking for question number 1, that is the plotting. ये 4 हो गया. Sir, I was unable to do the question number 1. So you were unable to do matlab? Sir, I posted the question number 1. I forgot to post the actual plotting. The plot itself. Yeah. तो Yes, sir. तो मेरे लिए तो ये मतलब बड़ा, मैं ढूंढता रहा. मैंने कहा पता नहीं कहाँ चला गया, किसी और जगह तो नहीं चला गया. मतलब ये तो डाल दो ना, मैसेज डाल दो ग्रुप में कि मैं ये भूल गया हूँ. अरे सर, वो मुझे एक्चुअली बाद में रियलाइज हुआ सर. वो रियलाइज्ड इट मच लेटर व्हेन आई वाज एक्चुअली चेकिंग एंड गोइंग थ्रू द आंसर शीट. बट व्हेन आई वेंट थ्रू द होल, मतलब उसके बाद मेरे को अगर नहीं मिलता तो देन आई कीप सर्चिंग अराउंड ना. सो मेरे 10-15 मिनट ऐसे ही बर्बाद हो गए. So that was the and हर बैच में ये होता है. So it's not कि Rohan, you have done something unique. It's a very common thing. Every batch I get 1 or 2 guys so who forget, and so therefore you have written. सबसे पहले तो the solution itself, you are not answering the question which was asked. The question was asking you the target course and speed. You have answered that. Then the question is asking you aspect, उसके बारे में कोई mention ही नहीं है, right? You're not
उसको उसको कुछ मेंशन ही नहीं कर रहे हो आप. दैट इज, यू डू इट पॉइंट बाय पॉइंट ना. जो चीज मांगी गई है उसको पॉइंट वन पॉइंट टू लेके कुछ करके बना के अच्छे तरीके से नीटली प्रेजेंट करो, right? And then of course the plotting sheet should be attached to this. So that is why you've got a zero in this, right? So then I'll show another answer sheet. So एक और दिखाता हूँ. So okay. So now in this one, so in this one, this is how your answer should be. A, B, C. ऐसे जैसे दिया हुआ है. Then D, then E. So, so this is fine. This is fine. भाई इसकी कैलकुलेशन कौन दिखाएगा? सवाई. Who will show the calculation? There is a certain procedure मैंने आपको सिखाया है कैलकुलेशन का एस्पेक्ट का, वो तो दिखाओ, फिर बताओ कि ये ओवरटेकिंग है. यस. सो प्लीज मेक श्योर ये मिस्टेक आप लोग ना करो. ये वाली जो रेडार प्लॉटिंग शीट है, मैंने क्लास में खास बोला था कि ये यूज नहीं करनी है. ये तो जहाज वाली है या नेट से आपने ली है जो भी, बट प्लीज डोंट यूज दिस. You have to use the one which is used in the examination hall. And मैंने वो ग्रुप में पोस्ट भी करी थी. I had posted it in the groups. So I don't know why you guys have not. इसमें रेंज सर्कल्स नहीं होंगे ना, it will be only plain. See, whatever it is, the point what I'm trying to make over here right now is to get you used to the MMD answer sheet. You know, my aim is that कि जो MMD में यूज होती है वही यूज करो, ताकि you get totally used to it. You get used to the scale, you get used to the layout, the format, सारा कुछ. जो हम लोग को मिला ARI से वही यूज करेंगे प्लॉटिंग शीट. That's right. Yes. That's okay. Right. जो मैंने आपको भेजी थी खास, और मैंने पिछले महीने बोला भी था कि the January batch had made the mistake, so I told the February batch. I spoken in the class. मैंने सारा announce किया था not to use this, but I still there are other guys also who have used it. So this was that. Then another one which I want to show you. Of course, Varun will not be in the class. I think Varun is not there in the class, but I'll still show it. Okay. Okay. This is fine. This is fine. This is a way to show the aspect. Now see this. Now I can't see the circle at all. मुझे सर्कल पता भी नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि बनाया है कि नहीं बनाया है. I can't even make that out. This is the sheet which you will get in the exam, in MMD exam. This is the one which we will be sending you. ARI is sending you that. So please use this sheet. But
प्लीज मेक श्योर यू ड्रॉ द सर्कल जिसकी टेंजेंट बना रहे हो, वो तो सर्कल तो बने कम से कम. So don't leave it like this. In the MMD exam hall, MMD में, यहाँ पे ARI में चलता है, ये नेम यहाँ पे नहीं आएगा. You're not supposed to disclose your name anywhere on the sheet. कहीं पे भी नहीं आपने disclose करना other than the designated place. So MMD में यहाँ पे नहीं नाम आएगा. Please remember. MMD में. ARI में ठीक है. This is question number 1. Is this written in pencil by any chance? Here, this was not required. Drawing of these circles. I don't know what he is trying to show. Because this is not to scale also. It's getting distorted. The circles are not accurate. So why are you losing marks unnecessarily when this is not equal? Or this is off-centered? By drawing these circles, concentric circles, the range rings, you have unnecessarily negated your marks. I don't know what you're trying to do. कम से कम ये इक्वल तो होने चाहिए थे, ये इक्वल ही नहीं है. So don't do all this. I have not taught you कि ये करना क्या है. ये तो मैंने सिखाया ही नहीं है कुछ. एंड आपको मैंने खास बोला था स्केल ये वाला तो हम कभी यूज करते ही नहीं है. आई डोंट नो हाउ यू आर यूजिंग इट. इसमें क्या था, डिस्टेंस क्या था? व्हाट आर द डिस्टेंसेस? 10-12 माइल्स था, क्या था? Coming to stability. Stability, everybody has done correct and absolutely fine. Nothing wrong. Please remember, very, very basic. This is MV Hinship question.
In MV Hinship, we never use TC. Very, very basic thing. It is always a trim. There is never a TC here. So this can go as a principal error by some examiners in MMD. They take this as a principal error. We never use TC in Hinship. We always use trim. Trim. Final LCG. Trim. Final LCG. Question number 1, bilging. Everybody's got it correct. Nobody's made a mistake in this. Probably इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी, सबने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है. Wrote it also, since KG not given, MCTC, perfect. TATF, and finally the drafts. Then question number 5, perfectly fine. Parametric rolling, perfectly fine. Then inclining experiment, perfectly fine. So scored perfect marks. Perfect. ये भी वही नकल मारी हुई है टीसी की तरह, सेम. एक ने मिस्टेक करी, सब ने कॉपी करके वही वहां डाला हुआ. Bilging, shift of axis, SFBM diagram. This was fine. So surviving.
This is correct. This is correct. This is correct. यहाँ पे नेगेटिव साइन मिसिंग है, माइनस साइन. प्लीज शो दैट. अगर हम ये मेथड कर रहे हैं, बिकॉज ये एक मेथड है, तो आपको नेगेटिव साइन दिखाना है. प्लीज रिमेंबर दैट. अगर कोई और मेथड करते हो, देयर आर वेरियस मेथड्स टू डू द सेम थिंग. मैंने खाली यही मेथड सिखा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज एक्सेप्टेड इन एमएमडी, दैट्स व्हाई. यहाँ पे देयर वाज लॉट ऑफ कटिंग एंड ऑल दैट. This is perfect. Perfect. Purpose. kg of the ship in light ship condition and GM भूल गए. GM solid light ship. There are two purposes. ये कहां से लिया आपने? At intervals not exceeding 5 years, light ship survey must be conducted. हाँ जी, ये तो मैंने लिखवाया ही नहीं है. ये कहीं से कॉपी किया है क्या? बिकॉज ये तो गलत हो गया. By this logic, have you seen on any of your ships this survey being done? बताओ भाई. Anybody has seen this light ship survey? नो सर. No. No, मैंने भी sir. नहीं देखा. मैंने भी नहीं देखा, अपने पूरे करियर में नहीं देखा मैंने. हालांकि यार्ड डिलीवरी के लिए गया हूँ, हालांकि स्टील रिन्यूअल्स किए हैं, बट आई हैव नॉट डन इट इन सो मेनी इयर्स ऑफ माई सेलिंग. ये तो गलती से सेंटेंस लिख दिया, 5 इयर्स. पता नहीं कहाँ से कॉपी किया है. सर आई थिंक ऐसा ही कुछ शिप में दे रखा है, बट दैट इज फॉर द पैसेंजर शिप एंड वो इट्स पैसेंजर शिप का लाइक. तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है. दैट इज जान के ही मैंने पढ़ाया, बिकॉज अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाते हैं आप. आई डेंट डू दैट. मैंने इंटेंशनली नहीं किया, नहीं तो घूम जाते सब के सब अगर मैं पैसेंजर शिप कराता. इसलिए जान के मैंने उसको छोड़ दिया. जो चीज़ आती हमें करनी है, जो चीज़ हमें लिखनी है, लेट्स स्टिक टू दैट. दिस इज फाइन. ये ठीक है. मैंने कोई नंबर काटे नहीं है, बट एग्जाम में प्लीज बी वेरी केयरफुल. इसी चीज़ों के नंबर कटते हैं. आई डिड नॉट इंटेंशनली कट इट. मैंने कहा छोड़ दिया. बट प्लीज बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल इन द एग्जाम्स. बहुत केयरफुल होना पड़ेगा.
एग्जाम्स में तो डायग्राम थोड़ा नीट बनाओ, ये हॉच पॉच से डायग्राम है. Diagram could be much neater. It's too complicated a diagram with too many lines drawn. This is fine. He's also used TC. Everybody seems to be trim. LCB, LCG, final LCG, final LCG. Distance from forward perpendicular. Okay. Inclining experiment. GM light shift. Perfectly right. Perfect. So perfect. बाकी ठीक है. What is negative sign indicating? You have to write one line here. Minus sign क्या indicate कर रहा है? You have to write that line, no? Examiner को नहीं पता ये minus sign क्यों है. So please explain. Minus sign क्यों है? ये SF एंड DM का फ्री हैंड जो एक्सेप्टेबल है सर? हाँ एक्सेप्टेबल है. दिस इज फाइन. द ओनली थिंग इज कि ये कुछ ज़्यादा ही क्रूड बनाया है. इसमें ना कोई स्केल है, कुछ है, कुछ भी नहीं है. So that is the only issue I have. There should be some scale ना, x axis, y axis में इतना कुछ लिखता था.
बोर्ड पे कुछ नहीं बनाया है उन्होंने, तो उसके नंबर कटेंगे एग्जाम में. Okay. When you don't write x-axis, y-axis, scale, because it's all to scale. Please remember, whatever scale you choose, but scale तो होना चाहिए. Okay, sir. तो हाँ, तो उसके नंबर कटेंगे इसमें. That is unnecessary कटेंगे नंबर. सारे सब पॉइंट्स लिखे हैं इसमें. That's fine. Just ये डायग्राम बहुत रफ ड्रॉ किया है. That's the only thing. ये कैसे आया ये नहीं बताया. This derivation part of it is not complete. So okay. So please don't make the same mistakes in the exams. Neat रखना अपने diagrams को. That's very important for you guys. And plotting sheet. Please use the correct plotting sheet in the exams. Right. And the Feb batch. Uh, please make your MMD files and keep it ready with you. So I don't think you guys have made the MMD files as yet. Correct? Fab guys have not done that. So the have you received the instructions to make the files? Fab guys, have you received the instructions to make the file? So you had sent the sample file.
Right. regarding the Right. So for you have to reference. right. So you have to make your sample file in the same manner. In the same manner. I'll post the rest of the instructions also. जो phase 1 को post करी थी, I'll post it to you, your batch, and also the March and the April batches can also start making your file. Whether you use it or not is a separate issue. File तो बनानी ही है. So might as well use that exercise to do it today. Today is a day for that. So today is just keeping it only for showing you your mistakes कि कैसे marks कैसे बचा सकते हैं हम, and for making the file. Administrative work. ठीक है. सर अप्रैल बैच को भी सर सेंड कर दीजिए सैंपल फाइल पर. Yeah, I'll do that. I'll just put it in the group so that the March and the April batches also start making. It's all because it's a very standard thing. You have to just make the file as per the checklist and start collecting and collating the documents in that order and रख लो अपने पास में ताकि जब भी short notice जब भी आएगा MMD की तरफ से immediately I'll announce it in the class or in the group and then you can start posting it. ओके सर. So that's that. For the Feb batch, there is a Medicare which is starting on Monday. So please, जिन लोगों ने Medicare join करना है, Feb guys, if any of you have not yet done, you can join the Medicare on Monday. It's a 8-day course. 2 दिन के प्रैक्टिकल वो बाद में होंगे जब भी होंगे. That you can do any time any later also. अभी 8 days अपना ऑनलाइन वाला जो पार्ट है वो खत्म कर लोगे आप. It will be done online only. So you can finish that sitting at home. ठीक है? Is that okay? Sir, in case practical नहीं हो पाए तो the validity will be 18 months for the certificate. That's right. Basically, that's what DG has done now for all the certificates. If no practical is done, so what DG has done is it's divided your modular courses into 2 parts. Online only 18 months. It's called as part A of the certificate. Practical done, part B. Part A and part B can be done from anywhere. Part A is separate, part B is separate. Separate fees for part A, separate fees for part B. Practical has to be done at the institute because Medicare में hospital visit involved है. And अभी it's not safe to take you guys to a hospital. लेने के देने पड़ जाएंगे. वहाँ गए और लेके आ गए कुछ और. तो इसलिए अभी सिर्फ पार्ट ए 18 months वैलिडिटी वाला आपको मिलेगा. So that at least you can move ahead with your file and orals and all that because अब orals भी शुरू हो रहे हैं. So धीरे धीरे now things will start. You guys have already gone through the grill and drill. The March and the April batches have gone through this thing. What was your experience like? हमें तो पता ही नहीं चला कब डीजी आए या चले गए. हम लोग बस बैठे हुए थे. वो तो आपको पता नहीं चलेगा ना. वो अनाउंस थोड़ी करेगा कि तालियां बजाएंगे एंड ऑल दैट. नहीं सर, उन्होंने पहले बोला था मनुराज सर ने कि वो हम लोग को एक नोटिफिकेशन देंगे डीजी इज इन, सो दे आर देयर. करेक्ट. तो वो हम लोग बैठे तो हमें पता ही नहीं था कि तब बोले एवरीथिंग इज डन ओवर, यू कैन रिलैक्स, एंड देन द क्लास वाज डिसमिस्ड. Right, but the drill was done ना. You came to know the drill कैसे होता है. हाँ सर, अभी मेरा रूम थोड़ा अस्त व्यस्त था तो उन्होंने बोला थोड़ा सा को सिक्योर कर लो, और उसके लिए अभी कैमरे के लिए अभी मैं अगर एग्जाम होगा वैसा तो आई हैव टू सेट अप माय रूम एंड कैमरा एज पर द रिक्वायरमेंट्स. करेक्ट. सर हमारे साथ तो ड्रिल हुई नहीं सर.
हाँ, आप लोगों के कुछ इश्यूज थे ना, किसी का जिसका जो कि नहीं सर, हम फेब बैच वाले सर, हम खुद ही एग्जाम दे रहे थे। हाँ, फेब बैच वाले में ठीक है, वो तुम्हारा भी आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, डोंट वरी। बस देखना ही है सर कैसे होता है सर इतना ही पता करना है सर, और कुछ नहीं। बताओ भाई, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया। एग्जामिनेशन Best part was कि even we don't have to type everything, like हम books में भी notes में भी pad पे भी solve करके then we just take the photo and we can attach to the paper itself. कंप्लीट हो जाता है क्या पेपर जल्दी, मतलब हो जाएगा कंप्लीट टाइम में? डिपेंड करता है, ऐसे हम पे लिख रहे क्योंकि सर you उसमें just सिर्फ write on एक the चीज note. थोड़ी सी ट्रिकी लगी, वो जो कैलकुलेटर है उसमें, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू यूज साइन ऑफ 45, तो जैसे हमको आदत है साइन 45 लिखने की, उसमें 45 करके साइन दबाना पड़ता है, और कुछ चीजों में थोड़ा सा अलग है। So it's an online calculator, okay? So you will have a calculator online. So you have to use that calculator. You can't use मैं अपना use कर रहा हूँ. So that's the only difference. और मतलब जैसे हिंटशिप में हम लोग इंटरपोलेशन के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते थे, Right. अब वो उसमें शायद ऑप्शन है नहीं, हाँ. तो वो थोड़ा सा। सर कैलकुलेटर भी हम अपना नहीं यूज कर सकते ना. सर? ये दोबारा होगा सर, दोबारा कंडक्ट होगा क्या? अभी तो बहुत चलेगा, अभी तो several सर एक rounds. बार हमारे साथ भी कर लेना सर, फेब बैच के साथ सर। होगा. Don't worry about it. I'll be doing it. With every batch I'll be doing it. उसके लिए सर लेकिन शायद विंडोज 10 स्पेसिफिकली चाहिए, हाँ. और वो मैक में चलता नहीं है। मैक में नहीं चलेगा. सर तो अमेजन में जो लोग ऑर्डर किए उनका पूछ लीजिए सर कब आ रहा है। आप लोगों ने फंसा दिया सर मैक वालों को। नहीं, मैक के साथ में बहुत सारे इश्यूज हैं. So that is the reaन why Mac is not in any of the DG this thing, even for your exit exam etc. सर रांसको और मेडिकेयर क्या सीन है सर? कभी व्हाट यू एक्सपेक्ट, कब तक स्टार्ट होगा? नेक्स्ट मंथ? अभी तो आई डोंट सी मेडिकेयर तो चालू हो गया ना ऑनलाइन, तो बता ही दिया आपको मैंने. अच्छा सर, और रांसको का सर? Ransco will start shortly, the online component, the online, because the part A part of it that can start. The part B of it that has to wait, the practical part. So इसलिए उसकी थोड़ी सी क्योंकि सर और मैंने वो कोर्सेज नहीं किया, मुझे एग्जाम रिटर्न के बाद ओरल देने हैं, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा. That's not एग्जाम्प्ट हो जाएगा. ओके सर. ओरल के बाद अप्लाई करने से पहले करके दे सकते हैं ना सर? करेक्ट. That's how the exemption will come, कि जिन लोगों ने ऑलरेडी रिटर्न्स कर लिया है, and so you need to get your modular courses before the COC. सर एक क्वेश्चन और था. मैंने सर फेज 1 जनवरी 2017 में क्लियर किया था, और फेज 2 के लिए मींस जो मेरे दोस्त ने, एक फ्रेंड ने आपको कॉल किया था, उससे बात हुई, आपने बताया था कि मुझे फेज 2 का एग्जाम ओरल जनवरी 2022 तक क्लियर करना है, नहीं तो फेज 1 अगर सर ये जो एक्सटेंशन मिला है कोविड का, वो काउंट नहीं होगा? हो जाएगा काउंट. वो कंसीडर कर लेंगे ना सर? क्योंकि बीच में तो मैं कर नहीं पाता वैसे भी, तो शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन कीपिंग द पीरियड, क्योंकि ना कोई कोर्स चल रहा था ना कोई एग्जाम्स चल रहे थे उस टाइम, तो आदमी कैसे प्रिपेयर करेगा? बिल्कुल ठीक. So you can just write one email to DG shipping. क्योंकि सर रिटर्न तो मैं क्लियर कर लूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओरल्स का तो गारंटी नहीं है सर कि फर्स्ट अटेम्प्ट में. इसीलिए so write one email, write that, उसमें ये स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम अपनी लिखना कि I appeared for my phase 1 in so month, I am appearing for my phase 2 presently, my phase 1 will be lapsing in so and so because of these COVID times. I request you to kindly allow for the extension of that period. अब जिस एमएमडी से अपीयर करूंगा उसको रेफरेंस करके लिखना होगा? नहीं, you are writing directly to DG shipping. ओके सर. तो DG shipping के वेबसाइट पे जाके श्री अमिताभ कुमार जी का जो ईमेल आईडी है, dgs@of, ओके सर, उस पे लिखोगे. तो मैं लिख दूं. एंड उसी पे को सीसी करोगे टू NA नॉटिकल एडवाइजर, NA@rate of DG shipping. ओके सर.
So you'll send your mail to these two people. You're sending your mail to DG Shipping himself, Shri Amitabh Kumar, and CC to Nautical Advisor. ओके सर, अंडरस्टूड, मैं एक ईमेल लिखूंगा. So थैंक यू फॉर दैट. सर ये जो 5 ईयर पीरियड रहता है ना टोटल एग्जाम्स क्लियर करने का, दैट इज अपीयरिंग इन रिटर्न्स या टिकट निकालने तक का टोटल 5 ईयर पीरियड है वो? पूरा निकालने तक का. ओके ओके ओके. ऐसा नहीं है कि आपको मतलब रिटर्न्स सिर्फ अपीयर करना है एंड आपको पूरा सब क्लियर ही करना है विदिन 5 ईयर? पूरा क्लियर करना है. खाली ये है कि ये यू आर आस्किंग फॉर सर्टेन एग्जामिनेशन ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, ये वाला जो पीरियड है जिसमें एग्जाम भी नहीं हो रहे एंड टू मच ऑफ डिसरप्शन इज देयर. क्योंकि सर सारे सर्टिफिकेट्स को 2020 में इन लोगों ने 6 महीने की इवन 10 मंथ्स की एक्सटेंशन दी हुई थी. बिल्कुल. तो अकॉर्डिंगली इसका भी तो उसमें काउंट हो रहा है, क्योंकि सर मैं तो 2020 में कर नहीं पाता क्योंकि कुछ नहीं था, तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, और शिप पे भी जाना था. बिल्कुल ठीक. तो ये डिसरप्शंस को हमें अकाउंट कराना है. यस सर, एक ईमेल. ठीक है. All right. So please do your file work today. Please do your documentation today. Very very important. Feb batch. The rest of the March and April batches, please, जिन लोगों के बैठे हुए हैं या documents pending हैं या फिर so please submit all that today. All right. See you then. Okay. सर bye. आ सकती है गाइडलाइन एग्जाम की सर? हाँ जी. एग्जाम्स का कुछ आ सकता है? फेब बैच से बोल रहा हूँ सर. मुश्किल लग रहा है. मार्च तो डेफिनेटली, मई तो डेफिनेटली गया. जून का अभी वेट कर रहे हैं. अगर मान जाते हैं तो. अभी जो हमने ट्रायल रन करी है कल, वो इंजीनियरिंग बैच की हो रही है अभी, बिकॉज इंजीनियर्स आर गोइंग फार अहेड देन द टेक साइड. नॉटिकल अभी नहीं शुरू हुआ, so engineers का चल रहा है. अभी exam only for the engineering side, no nautical side. अभी नॉटिकल का भी आया नहीं है. अभी एक जो कल एक्सरसाइज हमने करी थी वो सारी की सारी इंजीनियरिंग की थी. सर अप्रूव हो गया सर ये डीजी से? Nautical इतनी जल्दी नहीं होता. अभी टाइम लगता है. अभी तो देयर बी सेवरल राउंड्स ऑफ इट. एक राउंड से काम नहीं चलता. अभी तो कल एक प्रिलिमिनरी हुआ है. जो कल हुआ है वो प्रिलिमिनरी 1 है. ऐसे करके कम से कम 7 राउंड्स होंगे. उससे 7 से जुलाई से पहले तो फिर मुश्किल ही है कुछ भी होगा सर. हाँ, जुलाई से पहले मुश्किल है. अभी तो सेवरल राउंड्स चलेंगे इस पे, बिकॉज मेनी पीपल हैव टू गेट कन्विंस्ड. See, now yesterday the guys faced some difficulties, okay? कि मेरा कमरा ठीक होना चाहिए, मेरी पोजीशनिंग, स्टारबोर्ड क्वार्टर वाले जो मेरा मोबाइल है उसकी मुझे पोजीशनिंग देखनी है ताकि वो मेरा 120 डिग्री एंगल बने, राइट? सो इट्स नॉट सो इजी. मुझे उसके लिए यहाँ पे एक टेबल रखना पड़ेगा स्टारबोर्ड क्वार्टर में, और उसको मेरा मोबाइल को उसकी पोजीशनिंग ठीक करनी पड़ेगी. मुझे मेरा विंडोज 10 होना चाहिए. करते करते मतलब यू कैन इमेजिन आउट ऑफ 34 गाइज जो हमने प्रपोज किए थे नाम, तो फाइनली वी लैंडेड अप विद ओनली 21 22, करेक्ट? So that means 13 guys. I had proposed 34 names. मैंने 34 प्रपोज किए थे. So finally select जो फाइनल राउंड में कल गए वो 21 थे. That means there is a drop rate of close to about 20%. There is a drop. That means मैं सोचता हूँ कि मेरा लैपटॉप ठीक है, सब कुछ ठीक है मेरे पास, लेकिन there is a 20% probability, 1/5 chance कि I might get rejected. So इन चीजों को पे अभी वर्क चल रहा है. एंड इवन सर बीच बीच में जैसे नेट डिस्कनेक्ट होता है तो योर स्टेटस इज ऑटोमेटिकली गॉन इनटू ऑफलाइन मोड. करेक्ट. उसमें दे विल लाइक इफ 3 तो मेरा लेकिन ऑफलाइन देन डिस्कनेक्ट हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी वो 1-2 बार बीच में आया था यूर ऑफलाइन. बिकॉज वो जैसी स्पीड जैसी डाउन जाती है
जैसी स्पीड डाउन जाएगी वो इमीडिएटली जो है वो डिटेक्ट कर लेता है, फिर वो इमीडिएटली आपको वो देता है कि यू आर ऑफलाइन नाउ। तो सर लेट्स से कि अगर लैपटॉप ऑफलाइन हो जाता है फॉर सम रीजन, तो जो हमारा मोबाइल जो कनेक्टेड है वो स्ट्रीम करता रहेगा कि वो भी बंद हो जाएगा? डिपेंड करता है आपने कौन सा, आप आर यू यूजिंग द सेम ब्रॉडबैंड कनेक्शन और आर हाँ, यू सेम यूजिंग सेम सेम वाईफाई। मतलब सर क्या सेम क्या वाईफाई, हुआ सेम था कि वाईफाई? अम, मेरे ख्याल से वाईफाई तो ड्रॉप नहीं हुआ था, क्योंकि जब वो ऑफलाइन दिखा रहा था तो मैंने नीचे लैपटॉप में वो स्टेटस बार में चेक किया था तो कनेक्टेड दिखा रहा था, फुल एक्सेस था इंटरनेट का। See, बट फॉर सम so रीजन let me just tell you very simple things. जब आप एग्जाम दोगे ना, आपको इंश्योर करना है कि उस वक्त जब एग्जाम दे रहे हो घर में और नहीं चलेगा, योर ब्रदर सिस्टर एक्सेट्रा कोई यूट्यूब ना चेक कर रहा हो, रन कर रहा हो, कोई मूवी ना देख रहा हो, यू हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स। यू हैव टू मेक श्योर कि कोई पिक्चर नहीं देख रहा किसी उस पे, बिकॉज बेसिकली व्हेन यू आर डूइंग दिस नेट स्पीड ड्रॉप्स डाउन, राइट? वी ऑल नो दैट, सो यू विल हैव टू इंश्योर दैट बिट। that means जब एग्जाम हो रहा है तो that means at home the rest of the people who are banking on the same Wi-Fi, you have to tell them, bhai please switch over to your own mobile data now. Then this what happens, bijli gayi. If bijli gayi, then you have to have the backup. So that means the your plug-in adapter of your Wi-Fi has to be on your inverter or whatever you got. Otherwise this will get disrupted. ये तो सर बहुत महंगा पड़ रहा है, मतलब लैपटॉप भी लेना पड़ेगा, So फिर anyway, इन्वर्टर भी लेना it's पड़ेगा। a one time thing. It's a one time thing. You have to use it because सर अब तो ये forever होने वाला अगर है. अगर लाइट चली गई सर तो कुछ टाइम तो दिया जाएगा ना सर। अब अडेप्टर अगर नहीं है तो वो सब लेना पड़ेगा, नहीं तो सर पहले। तो पहले से आप वो तो आप करके रखोगे ना भाई। प्लान बी क्या होता है जहाज पे, यही तो होता है। तो प्लान बी आप पहले से ही करोगे ना। You will have to do all these things individually so as to have a plan B ready so that you can give an exam uninterrupted. And but एक चीज है, this is not a compulsory exam, mind you. This is an optional. So you will have two options. You can come to MMD Noida and give an exam physical whenever it opens up, and you will simultaneously have a choice कि मैं घर में बैठ के ये करना चाहता हूँ. So there will be two choices to you. That is for sure. So, sir, hopefully, if situation improves by July, they can open the physical exams also. Correct. That is the so DG will do this. They will give you two options. ये नहीं कि it is डंडा कि नहीं यही करो, ऐसा नहीं होगा कभी. There will always be choices to you. That means doing it physically at MMD Noida, or I want to sit at home and I want to do this arrangement and all that. Then you do it. So those who cannot arrange plan B at home, let's say inverter or whatever, या just think जो भी है, या backup. So वो तो कर, because that's the only way things will function. And going forward, you will have to do it. So might as well start getting used to it right now. So yesterday was the first step towards it. That's why I chose phase 2 and I didn't choose phase 1 intentionally. मैंने phase 2 को choose किया. मैंने कहा पहले phase 2 को करने दो. मैंने ASM भी नहीं choose किया. Mind you, I had a choice कि मैं ASM करा लेता. मैंने ASM को भी नहीं किया. मैंने कहा पहले phase 2 को कर ले दो. Because phase 2 अगर एक बारी cover हो गई तो larger spectrum will get covered. That was the idea. Now I'll go back to the February batch, then the January batch, and then उनको भी कराऊंगा. That's my intention. एक करके. So I will get another. So Feb batch, you guys will have an attempt probably another 15 days from now, 10 to 15 days. Because जो कल glitches उन्होंने नोट करे हैं सॉफ्टवेयर, उनको 15 दिन लगते हैं उसको glitches को ओवरकम करने में. फिर उसके बाद एक और ट्रायल रन होगा, उसमें मैं फेब जनवरी बैच को बुलाऊंगा. Sir, for the dubbing exam. हाँ जी.
So this is for the dummy exam. This is for the dummy. अभी तो dummy चलेगा 5-6-7 round चलेंगे. Got it, sir. So this will be the first round, which yeah. What was it? So yesterday was the first round. Like this, yes, there'll be several rounds. Okay, sir. Until, there'll be a pre-quarter final, there'll be a quarter final, then there'll be a semi-final, then there'll be a final. And then they'll take some time off to assess everything and come with the final rules and regulations and everything. Absolutely right. Rules and regulations बन चुके हैं already, more or less. वो already drafted हैं, सब कुछ ready है. We've already made it, readied, and given it to them also. 95% calm done. It's a 5% amendment. That is already done. That is already done. Writing the rules and all that is already done. वो सब हो चुका है. So it's a matter of now trials and all that. These problems which keep coming from a student perspective, and problems which come from a administration perspective. These two have to be addressed, basically. But there are certain good things. But as you said, we can give offline exams also, right? Yeah. Choice होगी. That choice होगी. ये तो बात पक्का. ये तो rules में लिखा हुआ है. अगली सर मतलब ये चीज तो अच्छी है कि स्टार्ट हो गया. अभी ये स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा. हाँ, it'll definitely reach somewhere. Some version of it will reach, whether it's a pruned down version or not. Like you have said, calculator वाला. So ये calculator वाला मैंने जब try out किया था तो मेरे को भी ये same चीज लगी थी. So we have already done this. हमने ये exercise faculty के साथ already कर ली है. So that was our internal thing. हमने faculties को run किया था. So faculty sat as a student. सर इसमें ऑटो करेक्शन का फंक्शन नहीं है बिकॉज अदरवाइज वो स्पेलिंग करेक्ट करने नहीं ऑटो करेक्शन नहीं कर सकते वो उसको डिलीट कर सकते हो ऑटो करेक्शन नहीं कर सकते दैट वो नहीं अदरवाइज तो बहुत टाइम वेस्ट होता है नहीं ऑटो करेक्ट सी द आइडिया इज द एक्सपीरियंस इज अगर मैं कुछ लिख रहा हूं मैंने ए एन की जगह द लिख लिया तो मैं क्या करूंगा मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा उसके थ्रू एंड फिर मैं दोबारा लिखूंगा ना एग्जाम में सो द सेम ऑपरेशन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड देयर ये नहीं कि मैं उसको करके पीछे कर दूं नॉट दैट दे वांट टू सी कि अगर मैंने ए एन को काटा है और द लिखा है दे वांट टू सी दैट आल्सो So there is a logic behind everything. So that input we have already given. ठीक है, चलो, all right. See you then. Okay.